लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं इस तरीके के ब्लूटूथ ईयरफोन्स को जो कि ख़राब हो चुके हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइस आज का वीडियो शुरू करते हैं। गाइस इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा हमारा ईयरफोन और एक फीड ट्यूब, साथ में हमें चाहिए होगा कोई छोटे से पुराने ईयरफोन और साथ में हमें चाहिए होगा एक सोल्डरिंग मशीन जिसको हम वायर से जोड़ कर सकें। सबसे पहले हमें इस ईयरफोन को इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास बोर्ड और यहाँ पर कोई बैटरी है, बैटरी यूज करने काटना है। यहाँ पर दो वायर का देख सकते हैं ये ईयरफोन की, तो हमें दोनों वायर के अंदर इस वाले ईयरफोन को ज्वाइन करना है। तो अभी इसे कैसे ज्वाइन करना है आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें हमारे ईयरफोन के वायर के अंदर इस तरीके से इन को लगा देना है और फिर हमें देखना है हमारे ब्लूटूथ ईयरफोन को और इन दोनों वायर को ज्वाइन कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वायर को जोड़ दिया है। तो इस वायर को और भी ज़्यादा अच्छे से स्टिक होने के लिए हमें सोल्डरिंग मशीन का यूज़ करेंगे और इन वायर्स को सोल्डर कर देंगे। यहाँ पर हमारी वायरलेस शोल्डर हो चुकी है। चलिए इसमें ट्यूब लगा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा ये ईयरफोन यहाँ पर हो चुका है। हमने यहाँ पर इस वायर को ज्वाइन कर दिया है। तो अभी हम लेंगे हमारे इस कवर को और यहाँ पर हमारा ईयरफोन बैठ गया है। यहाँ पर मैंने वायर को ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर का कवर लगा दिया है। तो चलिए अभी इसे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सॉन्ग को प्ले करता हूँ। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना।